Yeah, good morning, team. Bikaji Food came with the results. Now, on the face of it, results look very good. Profit after tax for Q4 FY23 was higher by 51.4% at 37.7 crores. Revenue was higher by 15.6% at 461 crores. It is, and even EBITDA margin improved, but we need to understand. No, the valuation is not cheap. The stock trades at 74 times, even after the increase in profitability. The full year revenue was 1,963 crores. It was higher by 22%. Profit after tax was higher by 64% at 128 crores. The EPS for the full year is 5 rupees 15 paisa. Linde India came to results. So Linde India, the revenue for this quarter was higher by 18% at 630 crores. Profit after tax was higher by 50% at 99 crores. EBITDA margin improved 5% almost at 29.5%. The full year revenue was higher by 47.9% at 3,135 crores. The profit after tax 538 crores, which was higher by 6%. The EPS for the full year is 63 rupees. The stock trades at 61 times, but Linde India has been in an expansion mode. So we expect the revenue to grow at 25% in the next few years. So something to look for. Any correction could be an opportunity to buy Linde India. Tata Chemical board has appointed or reappointed R. Mukundan as MD and CEO for 5 years. This will be effective from 26th November 2023. Century Textile Board approves fundraising up to 400 crores via NCD. Ashok Leyland came with the results. Now the result was very good on face of it. And with 15 years fleet changing, I think Ashok Leyland is a stock to watch. So I was comparing Tata Motors, Ashok Leyland, and Ultra. Now valuation wise, Ashok Leyland trades very attractive compared to these companies. So Ashok Leyland is something one can watch. Any correction could be an opportunity to buy. JSW Energy came with the results. So the revenue for this quarter was higher by 9.39% at 2,669 crores. EBITDA margin was down to 27.91%. Previously, it was hovering around 40%. So profit after tax compared to last year, same quarter was down by 67% at 282 crores. So somehow the margins have come down, but I have not seen a power company getting so big a margin. So it should be because they were more into power trading. They were getting better margin and their other income was also very high. But now the reality check has come. So their revenue for the full year was 10,332 crores, which is higher by 26% compared to previous year. Profit after tax is down by 15%, which is around 1,480 crores. EPS at 8.99. So it is not a cheap stock, but somebody who is looking for a very long term can enter this company. Amar Raja has come with the results. So I did a comparative study. Exide is still looking better, but Amar Raja, the revenue, profitability and everything is good. And but there is a corporate governance issue. Amar Raja Battery, the promoter group is a MP, is a politician. So that we need to understand. That is why always Amar Raja trades at a discount compared to Exide. So he belongs to TDP, Telugu Desam Party. His father also was an MP. Now the current MD CEO is also an MP. So the revenue for this year is 2,429 crores, higher by 11.4%. Profit after tax was higher by 41% at 139 crores. EBITDA margin is 13.9%.
Revenue for the full year was higher by 19.4% at 10,388 crores. Profit after tax is 804 crores, higher by 56%. There is one transaction where Amar Raja will buy promoter group entity for 133 crores, which is a related party transaction. So normally, we don't like a related party transaction, but here they have said the Big Four has given the valuation metrics based on which they have done the transaction. Biocon came with the results. It is surprisingly very good result from a pharma company. So the revenue was higher by 57% at 3,773 crores. EBITDA margin has improved at 26.4%. Profit after tax was higher by 31% at 313 crores. Full year, the revenue was higher by 36.5% at 11,174 crores. Profit after tax was down by 16.8% at 643 crores. Now, 4 years before, their revenue was only 5,000 crores, but their profit after tax was higher than this. So even after revenue doubling, their profit after tax has not done very good. Shriram Properties has acquired a new project in Chennai. Total saleable value area of this is 1.9 million square feet and aggregate revenue potential is 1,200 crores. The companies in that notification has said company is among the top 5 developers in Chennai and has 4 key projects with 6.8 million square feet. So this is something to note. CMS Info System. This is one of the best result of yesterday. So they are paying a dividend of 4 rupees 75 paisa. Now their revenue was higher by 13% at 501 crore. Their profit after tax was higher by 25% at 80 crores. Their EBITDA margin is 29.7%. So their full year revenue is higher by 20% at 1,915 crores. Their profit after tax was higher by 33% at 297 crores. EPS of 17 rupees 84 paisa. Valuation is very attractive. So this is one stock to watch out for. ExxonMobil came with the results. They paid a dividend. They are paying a dividend of 40 rupees. The result is okay. No, I think valuation wise it is very attractive. So their revenue was higher by 9.6% at 951 crores. Profit after tax 95 crores, which is higher by 27.7%. Their full year revenue was higher by 20.7% at 3,802 crores. Profit after tax higher by 15.5% at 335 crores. Full year EPS 73 rupees 58 paisa. AkzoNobel is a Japanese MNC in paint division with more competition coming. I think AkzoNobel can sustain. With that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग एक कॉल पे एक बार हिंदी में करते हैं. सोमानी सिरामिक्स के नंबर्स आए थे. रिजल्ट जो था वो मार्जिनली आया था जो हम लोगों ने एस्टिमेट्स किया था उससे. सो जो उनका जो नेट सेल है वो इंक्रीज हुआ है 10.1% से ईयर ऑन ईयर. 6,792 मिलियन कंपनी ने नेट सेल रिपोर्ट किया है. कंपनी का जो टाइल सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है 9% से ईयर ऑन ईयर. 17.6 MSM क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 में रिपोर्ट किया है. गैस प्राइसेस से वो ऑप्टन मतलब सॉफ्टन भी हो रही थी ये क्वार्टर में. तो EBITDA मार्जिन एक्सपांशन हुआ है 900 बेसिस पॉइंट्स से ईयर ऑन ईयर. नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने रिपोर्ट किया 243 मिलियन और हेल्दी ग्रोथ है 42.2% की सेम क्वार्टर में. बाथवेयर सेगमेंट का रेवेन्यू वो ग्रो हुआ है 8% से ईयर ऑन ईयर. 742 मिलियन कंपनी ने रिपोर्ट किया है. नेक्स्ट अपडेट है एनसीसी के ऊपर. न्यू कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्डर किया है कि ऑल जो पेंडिंग कंस्ट्रक्शन है वो स्टॉप करेंगे और उसके बाद अभी तक कोई स्टार्ट नहीं किया है. तो स्टॉक वाइज देखते जाए तो एनसीसी का 3% ऑर्डर बुक है कर्नाटका से कंस्ट्रक्शन स्टेज में. तो ये जो प्रोजेक्ट्स है वो थोड़ा स्लो होंगे बट रेवेन्यू गाइडेंस है
वो इतना मेजर कंसर्न नहीं करेगा। द नेक्स्ट अपडेट है अशोक लेलैंड के ऊपर। अशोक लेलैंड के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छे आए थे। हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे नंबर्स एक्सपेक्टेड जो थे उससे ज्यादा आए हैं। रेवेन्यू है क्वार्टर का वो 33% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस से, और 28% की वॉल्यूम ग्रोथ है ये क्वार्टर में। इबिटा मार्जिन है 7 स्टूड है अभी 11% से, और वो एक्सपांड हुआ है 210 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थी उसमें डिक्लाइन देखी गई उसके कारण, और प्राइस हाइक्स ये क्वार्टर में की थी। ओवरऑल उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 760 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो हायर है 11% से। अब परफॉर्मेंस वाइज देखी जाए तो सक्सेसफुली एवटार रेंज जो है और लॉन्च ऑफ सीएनजी रेंज जो है आईसीबीज इन एलसीवी सेगमेंट्स में वो अच्छे किए। और वो जो व्हीकल्स है दोस्त एंड बड़ा दोस्त, उनका जो परफॉर्मेंस था काफी अच्छे से कंटिन्यू हुआ है। कंपनी का जो कौन कॉल है वो आज शेड्यूल हुआ है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिटेल नोट रिलीज करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो अपना जो शेयर्स है 2520 करोड़ का महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिव का, वो आज ब्लॉक डील से सेल करने वाले हैं। तो एमएनएम है अभी 1.21 करोड़ के शेयर्स। ब्लॉक जो प्राइस बैंड है 2430 है पर शेयर, जो कल के जो क्लोजिंग प्राइस है उसके डिस्काउंट पे है 5% से। और जो ब्लॉक डील है वो उनका जो क्लीन आउट डील है, मतलब जो एमएनएम का स्टेक था महिंद्रा सीआई का वो कम्प्लीटली ड्रॉप होगा, और जो एमएनएम हेल्ड अभी तक होल्ड करा था 3.2% स्टेक इन महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव का, वो अभी कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन के बाद कंपनी का नाम चेंज होगा महिंद्रा सीआई से सीआई ऑटोमेशन। देन नेक्स्ट अपडेट हिताची फूड के नंबर्स आए थे, काफी नंबर्स अच्छे आए थे। पैट है वो 51.4% से इंक्रीज हुआ है 37.7 करोड़ का। रेवेन्यू है वो 15.6% से इंक्रीज हुआ है 461 करोड़ का। फुल ईयर का जो पैट है वो 64% से हायर आया है 120 करोड़ का। इबिटा मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हुआ है। वैल्यूएशन वाइज हम लोग देखें तो ये कंपनी वैल्यूएशन इतना कुछ चीप नहीं है। वो ट्रेड कर रहा है 74 टाइम्स के इस पे, और उनका जो ईपीएस है फुल ईयर का वो 5 रुपीज 50 पैसा है। देन इंडिया के भी नंबर्स आए थे। रेवेन्यू है वो 18% से इंक्रीज हुआ है 630 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पैट 15% से इंक्रीज हुआ है 99 करोड़ का रिपोर्ट किया। फुल ईयर का जो रेवेन्यू है 3133 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। कंपनी अभी जो रेवेन्यू मतलब ईपीएस जो है उनका फुल ईयर का वो 63 रुपीज है, और फुल ईयर का जो पैट है वो 538 करोड़ है। हम लोग देखे थे कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, तो उनका जो रेवेन्यू है आगे जाके ग्रो हो सकता है 25% में। तो करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑल इंडिया में, तो ये स्टॉक आप करेक्शन में देख सकते हो। टाटा केमिकल है, उन्होंने आर मुकुंदन को सीईओ के लिए एज रीअपॉइंट किया है। सेंचुरी टेक्सटाइल है वो अभी फंड रेज करने वाले हैं एनसीडी से, और बोर्ड ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। अभी मैंने अशोक लेलैंड के नंबर्स डिक्लेयर किए थे, उसके बाद नंबर्स काफी अच्छे हैं, तो ये स्टॉक को आप देख सकते हो। और वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये स्टॉक अट्रैक्टिव भी लग रहा है, तो करेक्शन जब भी आएगा तो अपॉर्चुनिटी रहेगी अशोक लेलैंड के लिए बाइंग के लिए। जीएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 9.39% से इंक्रीज हुआ है 2669 करोड़ रिपोर्ट किया है। इबिटा मार्जिन है वो डाउन आया है 27.91% से। पैट कंपनी ने 282 करोड़ रिपोर्ट किया है। फुल ईयर का रेवेन्यू है वो 10,333 करोड़ का है। उनका अदर इनकम भी हाई है। देन नेक्स्ट अपडेट है अमर राजा बैटरी के ऊपर। हम लोग अमर राजा को एक्साइड इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो एक्साइड इंडस्ट्री ज्यादा बेटर लग रहा है। नंबर्स और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखे तो नंबर्स अच्छा है, बट उनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि इनके जो सीईओ जो है उनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो हम लोग को इतना पसंद नहीं है अमर राजा बैटरी। नंबर्स में पैट है 49% से इंक्रीज हुआ था 139 करोड़। इबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ था 13.9% से। फुल ईयर का जो रेवेन्यू है कंपनी ने 10,388 करोड़ रिपोर्ट किया है। फुल ईयर का जो पैट है वो 804 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो हायर है 6% से। देन नेक्स्ट अपडेट है बायोकॉन। बायोकॉन के जो नंबर्स है वो सरप्राइजिंगली काफी अच्छा है थे फार्मा सेगमेंट में। रेवेन्यू कंपनी का 57% से इंक्रीज हुआ है 3,773 करोड़ का। एबिटा मार्जिन भी 26.4% से इंक्रीज हुआ है। पैट है वो 330 करोड़ का है। फुल ईयर का रेवेन्यू हम लोग देख के तो 36.5% से इंक्रीज हुआ है। पैट है वो 643 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो पैट अभी भी डाउन ही है।
देन नेक्स्ट अपडेट है श्रीराम प्रॉपर्टी के ऊपर कंपनी अक्वायर करने वाले न्यू प्रोजेक्ट चेन्नई में और उनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ है। देन सीएमएस इन्फोसिस के भी नंबर्स आते हैं। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 4.75 रुपीज। रेवेन्यू है वो 501 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पैट 25% से इंक्रीज हुआ है, 18 करोड़ का रिपोर्ट किया है। फुल ईयर का रेवेन्यू हम लोग देखें तो 20% से हायर आया है, 10,950 करोड़ का। ईपीएस हम लोग देखें तो फुल ईयर का 17 रुपीज 84 पैसा है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है और कल के जो भी नंबर्स आए तो इसमें से इसके नंबर्स काफी अच्छे हैं। सीएमएस इन्फोसिस लॉन्ग टर्म फ्रेम से आप ये स्टॉक को एक बार देख सकते हो। देन एक्सा नोबल के भी नंबर्स आए थे। कंपनी ने 14 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिजल्ट ओके आया था। रेवेन्यू जो है वो 9.6% कंपनी ने हायर आया है। 951 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पैट है वो 27.7% से हायर होकर 95 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। फुल ईयर का रेवेन्यू देखे तो 20.7% से हायर है, 3,800 करोड़ का। और फुल ईयर का पैट हम लोग देखें तो 15.5% से इंक्रीज होकर 335 करोड़ का रिपोर्ट किया है। फुल ईयर का ईपीएस है वो 73 रुपीज 58 पैसा है। Technical and derivatives outlook on the market today. So yesterday we saw that after a gap up opening, Nifty traded sideways for most of the day, but faced some profit booking towards the end. This profit booking was mainly because of IT stocks. On the other hand, metal stocks continued to provide strength to the market. On daily chart, Nifty has formed a doji candle as technically the index seems to be trading within the range of 18,050 to 18,450. As per derivatives data, Nifty futures saw a long build-up, while on the options front, heavy call writing was seen at 18,500 and 18,400 strikes, which somewhere indicates a resistance for the index. On the put side, major put writing can be seen at 18,300, 18,200, and 18,000 strikes, which somewhere indicates supports on the downside. Nifty PCR closed at 1.20 levels as compared to its previous closing of 1.21. So based on both technical as well as derivatives data, Nifty can be expected to spend some more time within the range of 18,050 to 18,450 during this weekly expiry. And a decisive move can only be expected in the index once we witness a breakout from this range. Coming to Bank Nifty too traded sideways yesterday and faced some profit booking towards the end. During the day, however, it failed to sustain above the crucial 44,000 resistance in spite of a temporary breakout. As of now, it can be said that the market is looking at 44,000 level more as a profit booking area rather than fresh buying. Technically, the index continues to be range bound within 43,500 to 44,000. As per derivatives data, Bank Nifty futures OI indicates that there was a long build up. On the options front, significant activity can be seen at the 44,000 strike, where highest OI can be seen in terms of both call writing as well as put writing. Bank Nifty PCR saw an uptick close at 0.98 levels as compared to its previous closing of 0.90. So the overall structure, including both the technical and derivatives data, somewhere indicates a choppiness or a sideways move in Bank Nifty. Fresh buying can be planned either at corrections around the support level of 43,500 or once the price breaks above and starts to sustain comfortably above 44,000 levels. Overall, we continue to have a positive outlook and buy on dip approach in both the indices. In the cash market yesterday, FIIs did buying of rupees 182.51 crores while DIIs bought worth rupees 397.29 crores. Coming to some stocks to watch out for today are Exide Industries, Asian Paints, Concor, MCX, and TVS Motors. On the futures data, long build-up can be seen, or rather major long build-ups can be seen in Cipla, Adani Ports, and Torrent Pharma.
while short buildups can be seen in ICICI General Life Insurance, BEL, and Indigo. So this was all from my side. Handing it over to Bhavesh sir. Good morning, team. So, starting with some results update. First, Somani Ceramics reported results which were ahead of our forecast. Net sales was higher by 10% on a YOY basis to 679 crores, and tile sales volume was higher by 9%. Overall, EBITDA margin improved by 900 basis points YOY, so that was a very significant improvement. And because of that, net profit was higher by 42% YOY basis to 24 crores. Second, Ashok Leyland came up with numbers which were ahead of our forecast. Sales were higher by 33%, and EBITDA margin expanded again 210 basis points to 11%. And also net profit was higher than street estimates at 750 crores. So today post call we'll get further updates. Then there is a news on NCC. So new Karnataka government has orders to stop all pending construction work which have not started yet. But the NCC has only 3% of order book from Karnataka. These projects could slow down, but since it's only a marginal 3% order backlog, we don't foresee any major impact on NCC. Then on Mahindra and Mahindra, so Mahindra and Mahindra is looking to sell shares worth 2,500 crores of Mahindra CIE Automotive through a block deal, and it has put some 1.21 crores shares on the block at a price of 2,430, which is a nearly 5% discount to yesterday's closing price. So that might, if that goes to, it might be a little positive for Mahindra and Mahindra. So that's it from me. Over to you, the retail team. Hello. Yeah, we'll continue with further updates, starting with Torrent Power. Torrent Power is raising funds about 3,000 crore via NCDs. Secondly is on Century Board. Century Board has approved fundraising up to 400 crores via NCDs. Third update is from Metro Brand. They had posted their results. The net profit was down by 0.4%, 68.5 crores versus 69 crores. The revenue was up by 35%, 544 crores versus 403.2 crores. IRB Infrastructure says that the company has executed a concession agreement with NHAI for a payment of rupees 213 crore road project. And last update is on Varun Beverages. The company incorporated a South African wholly owned subsidiary to explore manufacturing distribution businesses of beverages.